इन इंग्लिश। फिर हिंदी में बोले आज्ञा चक्र जो होता है, ये आज्ञा माथा जो होता है, ये आज्ञा चक्र ये बहुत जरूरी चीज है और इसको संभालना चाहिए। इसमें यहाँ पर भी 2 चक्र होते हैं, यहाँ पर भी 2 चक्र होते हैं जिसमें महावीर और बुद्ध का स्थान है और ये क्राइस्ट का स्थान है, ये वाला। और इसका जो इधर का अंग होता है ये गणेश जी का स्थान है। एक ही समझ लीजिए, एक ही रुपए के 2 हिस्से हैं, एक साइड में गणेश है, दूसरे साइड में क्राइस्ट है। अब क्या होता है कि जब कोई भी चीज आप देखते हैं तो आपकी अगर आंख भी बंद हो तो भी हवा में से या कहीं से भी इस जगह में वो चीज घुस जाती है अंदर में। कोई सा भी विचार बाहर से आता है वो यहाँ घुस जाता है, कोई से भी वाइब्रेशन है वो यहाँ घुस जाते हैं। सब चीज ये चीज बहुत रिसेप्टिव होती है। जैसे आप समझ लीजिए कोई भूत आदमी है, अपने को बड़ा भारी स्वामी जी, गुरु जी या भगवान जी बन के बैठे, आप गए और उसके सामने अपना आपने सर टिका दी, फौरन उसके भूत घुस गए यहाँ से, इसमें से घुस जाते हैं, इसके अंदर से। और इसीलिए हम लोग सिंदूर लगाते हैं। लेकिन सिंदूर लगाना आजकल आउट ऑफ फैशन हो गया। पहले अभी लंदन में मैं सिंदूर लगाती थी, सब मेरे पे हंसते वहाँ। उनको पता नहीं कि ईसा मसीह का एक खून में लगा के घूम रही, लेकिन वो कौन जाने कि वो मेरे ऊपर हंसते। अब मैं हिंदुस्तान में भी देखती हूँ, दिल्ली में वो लोग मेरे सिंदूर को देख के हंसते। हिंदुस्तानी लोग ऐसे अंग्रेज हो गए हैं कि अब वो सिंदूर को देख के हंसते हैं हिंदुस्तानी। मैंने यहाँ भी देखा ये हालत है। तो सिंदूर लगाना पता नहीं क्यों पंजाबियों ने बंद कर दिया, मेरे समझ में नहीं आती कि पंजाबी औरतें सिंदूर ही नहीं लगाती। ये कुछ फैशन है क्या? बहुत गलत बात। सबको सिंदूर लगाना चाहिए माथे में, और सिंदूर से आपकी रक्षा होती है। और आदमियों को भी बाहर जाने से पहले थोड़े भगवान के सामने सर टेक करके सिंदूर लगा लेना चाहिए, बाद में पूछ ले क्या हर्ज है साहब हमको सिंदूर लगाने में। अंग्रेज लोग अपनी टाई लगा के घूमते, मैं पूछती हूँ इसमें क्या अर्थ है ये टाई लगाने में? इतनी महंगी महंगी आती है, 10-10 पाउंड की लगा के घूमते हैं, उनको कोई शर्म नहीं आए। हमको क्या शर्म आनी चाहिए सिंदूर लगा के घूमने में? मेरी समझ में नहीं आता। हमें अपनी सब चीजों की शर्म आती, क्या खराबी है सिंदूर लगाने में? मुझे पूछना ये चाहिए कि भाई जो चीज बहुत ही सरल है, बहुत ही जरूरी है, उसको हम क्यों नहीं लगाते? इसलिए क्योंकि अंग्रेज हम पर हंसेंगे। हम कौन पैसा चाहिए, गधे हैं बिल्कुल, उनसे कुछ सीखने का नहीं। उनसे क्या सीखने का? उनसे बढ़ के गधे कहीं नहीं होंगे। उनकी बातें मैं आपको बताऊंगी कितने महागधे हैं, लेकिन हमें अपनी बातों पे कोई विश्वास नहीं रहेगा। कर सिंदूर यहाँ लगा भी देती, जाते तक पहुंच लेते हैं। उनको शर्म आती कि सिंदूर लगा के जान लो सब हंसेंगे। मैंने कहा कि बीच में से मांग निकालो, साइड से मत निकालो। साइड से निकालने से इम्बैलेंस आता, तो बीच में से नहीं निकाल सकते। औरतों जैसे दिखते भगवान रामचंद्र जी, क्या औरतों जैसे दिखते? श्री कृष्ण जी क्या औरतों जैसे दिखते? ये मैं आपसे कह रही हूँ कि ये सब अंग्रेजों की जितनी आइडियाज है, इनको चूल्हे में फेंकी, किसी काम की नहीं। आपको हिंदुस्तानी बन के शान से अपनी तीला लगा के चलना चाहिए, इसमें कोई खराब बात है। आपके माँ के निशान, इसको लगा के घूमने से आप लोग बचेंगे, नहीं तो नहीं बच सकते। कोई इसमें शर्मा। अब ये लोग सब लगा के आए, देखिए आप जो प्रदेश से आए, विदेश से जो आए हमारे साथ में, ये सब लगा के आए, देख लीजिए आप, ये अपने माथे पे लगा के बैठेंगे क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस समझिए। आप लोग नहीं लगाए। You catch very fast, and when you catch from your eyes, it goes through your Agya Chakra. Now this is the protection of Agya Chakra. It's actually the blood of Christ that you wear. But people must have that courage. They'll wear a cross, but not this. In the Western countries, it's very difficult for people to have that much courage to put on this. They will have excuses, mother will lose our jobs, this, that. Every sort of an excuse is there. But if you are courageous people, then you have to start wearing it sometime. Maybe in the night you start first, then in the daytime. Slowly you can creep into it. That's the only thing I think you people have to wear. That's important. That will be a good idea because you will not catch. Because you go outside, your attention is outside, you see what's happening outside, the atmosphere is bad. Moreover, if you put this on, it will not only protect you but also protect others. They will have a new idea. After all, you will dress up like them, you are just like them. You have to be. But you have to protect. And for protection, you have to wear something like that. I found that when I went first to England, they used to laugh at me looking at my red mark. I mean, if they wear lipsticks, it's all right. Even if they are clowns, if they are hippies, they are punks, it's all right. But if you wear a proper thing, which is scientific, it's more scientific. So to understand the science of the roots, you must understand what it means, why this culture is like this. Because it is more towards the roots. The movement is not towards the tree, and the tree where it has ended up, beyond the Muladhara Chakra. So now they are returning back. To go from the leaf to the roots is very difficult, but to go from the roots to the leaves is easier. So for this ascent, we have to be humble, to know about the knowledge about the roots. Now, why they put on all of them?
this is the reason. That to protect your Agya, first of all, there's no entry. That's why once an Indian gets a realization, he ascends. He doesn't go on catching again. I mean, this doesn't happen here. This is one of the things one has to do. Then the second us to deliver the complete idea about it. But it's the most important chakra. Now, why do we put red mark here? I mean, many people don't put it. Many ladies also these days don't put it. The red mark is because if you put the red mark, then the red is the sign of innocence. Is the sign of innocence. Is the sign of a person who believes in innocence. And all the bad prakritis, all the dushta prakritis which are against God are frightened of the red. That's why we wear this special red, just to frighten them. Especially the ladies are very easy to catch these depressive moods from others. Like a woman having hysteria, another one has hysteria. All these depressive moods can be controlled if you can put the red here. Men should also put the red. It's a good idea. But it's a very difficult thing to tell people who are so fashionable that they find it's impossible to put a red mark on the head. But red mark is the one that saves you. In Sahaja Yoga, what we do, those people who suffer from such affectations in the psychosomatic side, we ask them to put a vibrated red mark in the night when they sleep, and they have been cured. It's very simple. But to believe in it is an impossibility for people, that how can a red mark solve it? But it is vibrated, means there is the Brahma Shakti inside it, and it we say the mantras. Now this one is something right. And now red, you know, it has the what you call wavelength, which can be seen by anyone. The fastest, you see, it has such a short wavelength. They say that it can pass through and bend itself very well. That's why this is the red mark they have described in the Bible. Now the red mark, this one, this is made out of a very auspicious thing and then burnt into this color. This is the color of Shri Ganesh. And if you put it in the night before sleeping on your forehead, if you are possessed, the possession will leave you. But it should be vibrated. It should be vibrated. Once it is vibrated, it has that power. And it really clears. I will try today on some of you. It clears completely your head. Makes it properly. Because he is going to say mantra, I am putting this one. All these have significance only when they are vibrating. Without vibration, it is empty ritual. See, lag raha hai na? Just screw, you know, the screw, tight one, is loosened. Or if it is loose, it is tightened. You all will feel it also. On the collective.